हे व्हाट इज़ अप इंटरनेट। नॉइज़ ने अपनी एक नई स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है। दिस इज़ द नॉइज़ कलरफिट अल्ट्रा और मैं इसको लास्ट 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। एंड इन दिस वीडियो लेट्स लुक एट व्हाट यू गेट इनसाइड द बॉक्स एंड माय इनिशियल इंप्रेशंस। Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. Now the unboxing experience is pretty straightforward. आपको बॉक्स में of course watch मिलती है and then you also get some paperwork including the warranty registration card and then lastly you get that standard magnetic 2-pin noise charger. Now as soon as आप noise Colorfit Ultra को unbox करते हो आप immediately notice करोगे कि ये बहुत ज़्यादा हल्की वॉच है. Now I'm personally not a very big watch person but जब मैंने noise Colorfit Ultra यूज़ करना स्टार्ट किया it was not a very heavy watch to feel on your wrist and that's actually a good thing. But not to forget ये वॉच प्लास्टिक से नहीं बनी हुई है. इट्स एक्चुअली मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय एंड आई थिंक दैट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ you feel while wearing the watch, because I'm not sure about you, but for me, if a watch is made out of premium materials, like in this case aluminum alloy, it has a huge impact on not only on the durability but also on how it makes me feel while wearing the watch. And I think Noise Colorfit Ultra definitely does a really good job at that. Now in terms of aesthetics, of course जो इसका डिज़ाइन है वो अगेन एप्पल वॉच सीरीज से इंस्पायर्ड हुआ है. लेट्स नॉट डिनाई दैट, बट आई वुड से दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर द नॉइज कलरफिट अल्ट्रा. नाउ ऑन द राइट साइड यू सी दिस फंक्शन बटन एंड दिस वाज अगेन एन इंटरेस्टिंग डिसीजन फ्रॉम नॉइज, बिकॉज जो प्रीवियस कलरफिट वॉचेज है उसमें आपको वो सर्कुलर क्राउन लाइक बटन देखने को मिलता था, बट इसमें नॉइज ने सिर्फ एक फ्लैट बटन दिया है. नाउ पर्सनली मेरे को वो सर्कुलर बटन ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज फर्स्ट वो ज़्यादा टैक्टाइल होता है एंड सेकेंड इट मेक्स इट लुक मोर लाइक watch than a flat button would, but I think that's just me. Now what this button does is basically अगर आपकी वॉच की स्क्रीन ऑफ है तो ये बटन दबाने से वॉच की स्क्रीन ऑन हो जाएगी, और अगर ऑलरेडी स्क्रीन ऑन है आप ये बटन दबाने से मेन मेन्यू में चले जाओगे जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे लाइक वर्कआउट्स, हार्ट रेट. आई विल कम टू दैट इन अ बिट. नाउ बटन के अलावा यू कैन ऑल्सो यूज द रेस टू वेक फीचर एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली, although I would say is that there is a good 1 second lag if you're using it. Now just like any other smartwatch, Noise Colorfit Ultra में भी आपको 20 mm का स्ट्रैप देखने को मिलता है, सो आप ऑफ कोर्स अपने फेवरेट वॉच स्ट्रैप से इसको रिप्लेस कर सकते हो, या यू कैन कंटिन्यू यूजिंग द वन दैट यू गेट इनसाइड द बॉक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द हाईलाइटिंग फीचर्स ऑफ द Noise Colorfit Ultra. इट्स द डिस्प्ले. तो इसमें आपको एक बहुत अच्छी 1.75 इंचेस की TFT IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 320x385 पिक्सल्स, और मेरे हिसाब से कोई भी और स्मार्ट वॉच नहीं है अंडर ₹5000 जिसमें इतनी बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, विच इज़ रियली नाइस. आई एम क्यूरियस टू सी अगर मुझे इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैचेस आते हैं, बिकॉज I do not have any specific information on display protection from noise, but again that is one of those things I'll cover in my full review. Now एक चीज़ जो मैंने Noise Colorfit Ultra में notice करी after using it for about couple of hours is the user interface. तो जो इसका डिस्प्ले है वो तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, but जो यूज़र इंटरफेस है I would say is manageable. नाउ अगर आप वॉच फेस से राइट साइड स्वाइप करोगे तो आपको एक एक्टिविटी समरी देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने कितने स्टेप्स लिए एक दिन में, और अगर आप एक और बार राइट स्वाइप करोगे तो यूल गेट योर हार्ट रेट, और एक और बार करोगे सो यूल गेट योर स्ट्रेस एंड ऑल दैट. एंड अगर आप वॉच फेस से स्वाइप करोगे नीचे यू विल गेट एक्सेस टू योर नोटिफिकेशन, एंड इफ यू स्वाइप अप फ्रॉम द बॉटम यू विल गेट एक्सेस टू योर क्विक सेटिंग्स मेन्यू. नाउ आई लाइक द वे द UI इज स्ट्रक्चर्ड, बट आई डोंट लाइक द फैक्ट कि इसमें आपको कोई एनिमेशन देखने को नहीं मिलता. तो जब भी आप स्वाइप करते हो जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो जस्ट अपेयर हो जाती है. नाउ येस सेटिंग्स मेन्यू में और मेन मेन्यू में आपको थोड़ा सा एनिमेशन देखने को मिलता है, बट अगेन दैट्स वेरी जिटरी. बट आई वुड वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद दिस वॉच and tell you guys if this is actually a big deal if you're looking for a smartwatch or a fitness watch at this price point. So again, stay tuned for my full review. But keeping that aside, एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसमें कि आपको 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिलती है, सो वो बैकग्राउंड में भी चलता रहेगा. एंड दिस वॉच कैन ऑल्सो मॉनिटर योर स्लीप इंक्लूडिंग योर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एज वेल. दिस इज समथिंग आई डेफिनेटली डिड नॉट एक्सपेक्ट एट दिस प्राइस रेंज. नाउ इसमें आपको 60 डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड्स भी देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग योर रनिंग, साइकिलिंग, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, योर डांस, आर्चरी, यू नेम इट, आपको इसमें डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड उस चीज़ का देखने को मिल जाएगा. नाउ आई डिड यूज़ इट, मैं थोड़ी सी रनिंग करना
करने गया था एंड उसके बाद इट गेव मी इन्फॉर्मेशन लाइक कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी, एवरेज पेस कितनी थी, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया एंड व्हाट ऑल स्टफ. नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट द एक्यूरेसी बट आई एम प्लानिंग टू कंपेयर दिस विद माई ऑनर मैजिक वॉच 2 एंड ऑल्सो द एप्पल वॉच सीरीज 6 टू एक्चुअली नो कि जो ये मेजर कर रहा है स्टेप्स या एनी अदर एक्टिविटी ये कितना एक्यूरेट है. एंड बाय द वे इसमें आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंट भी देखने को मिलता है, सो आप इसको बारिश में भी लेके जा सकते हो अपना वर्कआउट ट्रैक करने के लिए. नाउ फॉर द वॉच फेसेस यू कैन आइदर यूज द 6 preloaded watch faces on the watch itself or you can just go to the Noisefit app and change it from there. You get about 30-40 options there and I would say noise और watch faces ला सकता है but for the time being I think they are decent and you will get a wide variety of watch faces there. And now that we are on that, let me also talk about the Noisefit app for a second. Now first of all, I really like the Noisefit app overall because it's very simple to use, it's straightforward and it's also intuitive at the same time. And also I like the fact कि इसमें आपको Google Fit का इंटीग्रेशन भी देखने को मिलता है and you also get setting like कि आप apps चूज कर सकते हो जिससे आपको नोटिफिकेशन चाहिए अपनी वॉच में and then there are other settings like कि आप ड्रिंकिंग वाटर का रिमाइंडर लगा सकते हो. मतलब कोई लगाता है सच में, मतलब मैं तो ऐसे पी लेता हूँ यार, बट you do get that setting as well and you also get an option to customize quick replies. But here is the thing, you can only use quick replies for calls if you're declining a call or for your SMSs, not for your WhatsApp or Instagram or any other app. Now, a couple of things that I would want to highlight about the Colorfit Ultra is first, इससे आप अपने फ़ोन का म्यूजिक या मीडिया प्लेबैक कंट्रोल कर सकते हो एंड सेकेंड इसको आप एज अ कैमरा शटर भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू टेक अ पिक्चर फ्रॉम योर फोन फ्रॉम अ डिस्टेंस. नाउ फॉर द बैटरी लाइफ, नॉइज ने इसमें 300 mAh की बैटरी दी है एंड दे क्लेम कि आपको 9 days ऑफ बैटरी लाइफ मिल सकती है. नाउ इट्स माई सेकेंड डे यूजिंग दिस वॉच एंड आई एम currently at about 70%, so I'm not sure if 9 days but I think this watch should last about 6 days, but again I will be able to give you more figures in my full review, so stay tuned for that. So yes guys, this was it for my quick unboxing and initial impressions of the Noise Colorfit Ultra. Now Noise ने इसको 4,499 रुपीज़ में लॉन्च किया है बट दे विल इंक्रीज द प्राइस बिकॉज जो इसका एक्चुअल प्राइस है वो 4,999 है. सो अगर आपको थोड़ी जल्दी है ये वॉच लेने की, आई लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो ahead and buy that. But if you want to wait for my full review, I will be uploading that very soon, so stay tuned. And if you like this video, make sure you hit that like button and show your love and also drop down your questions for the full review or anything you would want me to cover in the full review as well. And before you leave this video, make sure you subscribe to TQnet and especially hit that bell icon so that you get notified whenever I upload such videos in future as well. So till then, keep asking and I will see you in the next one.